Okay, so let's start. Hello. Okay, so let's start. So today we are going to learn about the image view in iOS, right? So let me create a project. Image view demo, right? And the basic attributes are set. Let's go to the next and create, right? તમે જોઈન કર્યું છે એ વાળું પછી ટ્રાય કરજો આ એકવાર શીખી લ્યો પછી બધું સાથે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરજો બરાબર Okay, so the indexing process is going on, right? Till then, let's go to the storyboard. Okay, the project is ready. We can implement the UI controls, right? Let's do that. Okay. So today we are going to learn about just two UI controls. First one is imagery and the second one is switch. Okay. So just go to the library, search for the image view and drag and drop. Now to add an image, go to assets folder, right? Here you can add new image set. So simply just click on this area, okay? Right click and new image set. So here you can see the options like 1x, 2x, 3x, right? So different sizes
of a particular image can be stored inside this. So let me just add one image. So you can just simply drag and drop image like this. Okay. Now if you want to rename this, just simply double click and it right manage the relations. Yeah. Okay. Right click, new image set, can add another image. Right. So basically I have taken two images, right? Okay. Now, huh? Okay, okay. Hmm? No, it's okay. Okay. અત્યાર સુધીનો ખ્યાલ આવ્યો શું કર્યું? Okay, quickly repeat કરી દો. From the library you can search for the image view. Okay, like simply directly look for image view and drag and drop. Okay, then go to the assets folder, right click on this particular area, a pop-up menu will be there, right? From there choose new image set. Okay, એનાથી એક new image set create થશે. આની અંદર તમને ત્રણ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હશે, 1x 2x 3x. એ એકચ્યુઅલીમાં સાઇઝીસ છે. ઓકે, લાઈક ડિફરન્ટ ફોન્સ હોય કે પછી કેમ ટેબ્લેટ ને એવી રીતે છે તો સાઇઝીસ અલગ હોય, એના માટે એક જ ઇમેજની ડિફરન્ટ સાઇઝીસ અવેલેબલ છે. તમારે કોઈ પણ ઇમેજ આની અંદર યુઝ કરવી હોય તો યુ કેન જસ્ટ સિમ્પલી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ. ઓકે, તો થોડી વાર પહેલા જેવી રીતે મેં મૂકી ઇમેજ, જસ્ટ હમણાં ઓપન થશે, રાઈટ? તો કોઈ પણ ઇમેજ લો, ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો લાઈક ધેટ. ઓકે, અને તમારે એનું નામ ચેન્જ કરવું હોય તો ડબલ ક્લિક કરો ને અહીંયાથી નામ ચેન્જ કરી દો. ઠીક છે? તો now I'm deleting this because મેં ઓલરેડી બે ઇમેજીસ મૂકી દીધી છે. ઠીક છે? તો તમે કોઈ પણ ઇમેજ બ્રાઉઝર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને એને એક્સેસ કરાવડાવી શકો છો. Now we are going back to the storyboard. Now let's explore the attributes which are related to the image view, right? So whenever you will click on the image view, at that time you can see the attributes on right hand side. Inspection pane માં તમને attributes દેખાશે. Okay, so the first one is image. તમને તમારી જે image set કરાવવી હોય તો તમે અહીંયાથી કરાવડાવી શકો છો. So just simply click on the down arrow and here you can see the images which we have imported, right now project na under માં તમને દેખાશે એ વસ્તુ. So you can use that, or else if you want to access any of the icons which are available in system, then you can just scroll through it. Okay, you can set any of the icons. Okay, suppose so right now I'm setting this iOS logo. Okay, suppose કોઈ icon set કરવો છે, for example this one folder, simply select that will be visible over here like that. Okay, then next is highlighted.
તમને કઈ વસ્તુને હાઇલાઇટ કરતી હોય તો એના માટે, રાઈટ. હવે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે that is view. Like if you are aware, then in Android there was a scale type. Yes. Right? The same thing you can implement with the help of content mode over here. Here is the option for the same. Okay. If you click on this down arrow, you can see multiple options available. Scale to fill, aspect fit, aspect fill, redraw, center, top, bottom, right? So scale to fill. So you can see, right? It will fill the whole area. Then aspect fit. तो जैसे फिट होता है वो एस्पेक्ट फिल, तो पूरा फिल करने का ट्राई करेगा. रीड्रॉ, राइट. सेंटर छोटू सा दिखाई देगा. टॉप, राइट. बॉटम, ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल. ठीक है. So right now I have applied aspect fit. Okay. Then semantic, आपको प्लेबैक में देना है या फिर लेफ्ट टू राइट करना है, you can implement that, right? Semantic का use, just a minute. You can see the tooltip, right? Is it visible? Semantic content attribute. So a semantic description of the view's content used to determine whether the view should be flipped when switching between left to right and right to left layouts. So basically उसे flip करने के लिए use कर सकते हो. ठीक है. तो अब basically आपको ये attribute की जरूरत नहीं है. ठीक है. Then there is another attribute alpha. You must be aware about it. आपने वो टोगल वाला नहीं, टोगल नहीं, ये एडिशन वाला जो प्रैक्टिकल किया उसके अंदर यूज किया होगा, राइट. आपकी जो ओपेसिटी है वो चेंज करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. यू कैन सी द ओपेसिटी इज चेंज, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, बैकग्राउंड. इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर यू कैन, राइट. एंड टिंट क्या है, जैसे आपके एंड्रॉइड में था सेम थिंग है टिंट का. अगर कोई बाय डिफॉल्ट आइकन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, देन टिंट क्या करेगा, उसका कलर चेंज करने के लिए. जैसे ये फोल्डर का कलर भी ब्लू है, यू वांट टू चेंज इट, राइट. सपोज आई वांट टू चेंज इट टू ब्राउन, सो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ टिंट. अगर आपने कोई ब्राउजर से इमेज ली है, सो फॉर दैट यू कांट चेंज द टिंट. ठीक है. सिस्टम इमेजेस पे ही कर सकते हो. So these are the few attributes. Then आपको stretch करवाना है, वैसे कुछ करना है तो आप यहाँ से वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. देखो बैकग्राउंड अभी ब्लैक रखा हुआ है, तो यू कैन सी ऊपर और नीचे, सॉरी ग्रीन रखा हुआ है तो ऊपर एंड नीचे आपको ग्रीन स्ट्राइप दिखाई देगी, राइट. बट ये जो ब्राउन कलर नहीं दिखाई देगा iOS में. Why? Because it's an image, not a system generated icon, right? That's why. Okay. Now I want to create its object in my view controller, right? So simply I'll create one more editor. Okay. यहाँ पे ये मेरा पुराना वाला एडिटर है, यहाँ पे दूसरा एडिटर है जिसके अंदर मैं ओपन कर रही हूँ व्यू कंट्रोलर. ठीक है.
अब if I want to create an object of this image view, क्या कर सकते हो? Simply press Control and click on this image view and drag in the UI view controller. Okay, and यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो. ठीक है, तो यू कैन सी आउटलेट कनेक्शन है. ठीक है, व्यू कंट्रोलर में ये फील्ड है. फील्ड का मतलब क्या होगा कि वो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा आपका जो स्टोरी बोर्ड में ऑब्जेक्ट लिया है उसके साथ, मतलब यूआई कंट्रोल लिया है उसके साथ. ठीक है, अगर वो फील्ड नहीं है मतलब उसका कहीं पे कनेक्शन नहीं है, उसका कुछ नाम दे देते हैं. तो आई एम जस्ट गिविंग अ नेम IMG इमेज. ठीक है, so type is UI image view. Okay, and it's of type WIG. So connect and here it is created. ठीक है, और ये देखो बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज फिल्ड. आप जैसे ही इसके ऊपर लेके जाओगे जो स्पेसिफिक UI कंट्रोल रहेगा स्टोरी बोर्ड में दैट विल बी हाईलाइटेड. ठीक है, so if there are so many UI controls you have already taken and you forgot the names, right? So at that time it can be helpful to you. Okay, now just like let's take one button. ठीक है, एक बटन ले लेते हैं, इससे हम टॉगल करें इमेजेस को. तो बटन के एट्रीब्यूट्स भी आपको पता ही होंगे, राइट? ऑल ऑफ यू नो ना attributes of button? Okay, I will just change the name. Let me just create an object of the button. I'm giving the name BTN. ठीक है, एक चीज दिखाती हूँ. देखो अभी बटन में अभी यहाँ पे फील्ड है ना. ठीक है, मैं ये जो हमारा व्यू कंट्रोलर है उसमें से डिलीट नहीं कर रही हूँ, बट ये जो हमारा स्टोरी बोर्ड है वहां से इस बटन को डिलीट कर देती हूँ. ठीक है, आई हैव जस्ट डिलीटेड द बटन. सो यू कैन सी दिस इज नॉट फिल्ड. कनेक्शन भी कहीं पे नहीं दिखाई देगा, राइट? ये एरर नहीं देगा वैसे अभी, पर इस तरीके से वो कहीं पे कनेक्टेड नहीं रहेगा वैसा. ठीक है, okay. Now let's just create one event of this button, right? So outside of this view did load method, so connection is action object view controller. Name दे देते हैं इसका, suppose click event. ठीक है, and there are multiple types of events available over here if you can see. जैसे कि आपका बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, डबल क्लिक इवेंट जनरेट करनी हो. ठीक है, या ऑन ओवर क्रिएट करनी हो. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए कि टच अप इनसाइड, टच अप आउटसाइड, वैल्यू चेंज्ड, देन एडिटिंग डिड एंड touch down, like that, right? So right now we are just going with the basic one, which is touch up inside. ठीक है,
अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये बटन पे क्लिक करें इमेज चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इमेज का img करके है, ठीक है, इमेज तो img डॉट इमेज इक्वल टू, उसका पेरेंट क्या है, ui इमेज, राइट, ui image in the bracket will write down named कॉलन, और ये स्ट्रिंग जो है उसके जगह पे हमें उसका नाम लिखना होगा। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट इट्स दिस वन, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, एक है iOS अंडरस्कोर और ये है लोगो, ठीक है। तो करंटली कौन सा है, करंटली है लोगो वाला, राइट। सो यू वांट टू ऐड iOS underscore, right? So you can change it simply like this. Right? Now let's just run this. Even you can change the background color and content mode from the view controller, right? उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी चेंज कर सकते हो। Kestrel is launching, ठीक है, लॉन्च हो तब तक हम कुछ और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो सपोज यू वांट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर, एज इन रन टाइम पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करें बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए है img डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, डॉट करके आप सारे कलर्स एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन है तो मैं उसे कर रही हूँ ब्राउन, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, right? Then the same way, if you want to change the content mode, you can do that from here. img dot content mode equal to dot, and here are all the available content modes, okay, you can choose any.
एस्पेक्ट फिल और फिट ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट। मीनवाइल हमारा सिमुलेटर ऑन लोड हो गया है, ठीक है। शायद से ये दोनों अभी क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे बिकॉज वो हमने बाद में ऐड किए, ठीक है। विल रन अगेन फॉर दैट, कैन सी द इमेजेस चेंज, राइट। फिर से रन करते हैं। ठीक है, ओके। The background color is also changed, which we have done from the our view controller, right? Now, can we do one thing? जितनी बार बटन पे क्लिक करें ना उतनी बार ऐसे इमेज चेंज होती रहे। वैसे एक बार क्लिक किया तो वो दूसरी वाली इमेज आ जाए, दूसरी बार क्लिक किया तो वापस से ये वाली इमेज आ जाए, लाइक दैट। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? चलो, लॉजिक क्या हो सकता है? सिंपली एक फ्लैग लेके कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है फ्लैग नहीं लेना है तो कोई एक वेरिएबल ले लो, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ एंड देखो कि ऑड है या इवन है। ऑड है तो कोई एक इमेज डिस्प्ले करो, इवन है तो दूसरी इमेज, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ फ्लैग वेरिएबल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, राइट। तो कई बार iOS में ये वाली एरर देगा, आपने इक्वल टू के बाजू में इस तरीके से कुछ लिखा होगा, इट विल गिव यू एरर। You just have to make sure कि दोनों तरफ स्पेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इफ फ्लैग, yes, right. यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग इक्वल टू else, इमेज और वो सब भी चेंज कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, बस पहले इसे कॉपी करते हैं, राइट। तो राइट, let's see how it works. Okay, change, 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 like this, right? Done, simple. Okay, now I hope image view is clear to you all, ठीक है। हाँ, एक और चीज ऐसा हो तो चेंज करके दिखता है यहाँ पे, fill to fill,
ऐसे करके, तो देखो क्या चेंजेस आते हैं। Right, you can see the whole area is filled now for the second image, right? Okay, now let's learn about switch. ठीक है, तो एक स्विच ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, just simply drag and drop over here. Okay, so there are few attributes related to switch which are available over here, right? जैसे कि स्टेट उसका कौन सा रखना है, बाय डिफॉल्ट ऑन रखना है या ऑफ रखना है। ठीक है, टिंट रखना है या नहीं रखना, इफ यू वांट टू अप्लाई टिंट यू कैन। ठीक है, देन थंब टिंट है, अल्फा वैल्यू है, बैकग्राउंड लाइक दैट, राइट? एंड उसका स्टेट सिलेक्टेड, इनेबल्ड या कैसे कौन सा रखना है। So let's start, right? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, switch underscore करके फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसकी इवेंट क्रिएट करते हैं कि अगर स्विच में उसका मोड है वो चेंज हो। ठीक है, मतलब बेसिकली उसकी वैल्यू चेंज हो तो क्या होना चाहिए उसके लिए, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर। ठीक है, एक्शन व्यू कंट्रोलर नेम दे देते हैं, स्विच वैल्यू चेंज इवेंट टाइप एनी। और यहाँ पे देखो लास्ट में, when this event will be called whenever the value will be changed. ठीक है, कनेक्ट। नाउ क्या करते हैं, जैसे ही उसकी वैल्यू चेंज हो ये प्रोसेस हम करवाएंगे। ठीक है, as I don't want to add any other UI control, just I want to display the process, right? तो यहाँ पे फ्लैग नहीं रखते, इसके जगह पे क्या आएगा, आपका जो स्विच है देखो इसके रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक ईज ऑन, ईज ऑफ, लाइक दैट। अगर स्विच ऑन है तो ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होना चाहिए, राइट? Okay. Right? So let's just run this. एंड अगर कैसे आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करवानी हो फ्रॉम व्यू कंट्रोलर, देन उसके लिए सेट ऑन सेट ऑफ वैसे है, यू कैन यूज दैट।
ठीक है, जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलेगा। So let's just turn off the switch and see, right? So this way your switch will work. Basic thing. ठीक है? Is there any questions or doubts related to this two UR controls? Switch and storyboard. Sorry, switch and image view. Okay. Then आज के लिए बस इतना ही। जो दूसरी चीजें हैं वो नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, ठीक है। जस्ट वन मोर थिंग टू आस्क, आपको सर ने सेफ एरिया और ये सब बता दिया था ना, व्यू और वो। आर यू अवेयर अबाउट सेफ एरिया एंड व्यू एंड ऑल दैट स्टफ? ओके ओके, ठीक है। तो आप अपने इमेज को भी पूरे एरिया में कवर कर सकते हो, जैसे कैसे आपने गैलरी व्यू रहता है उसमें हमने कैसे किया था, पूरा कवर किया था। द सेम वे यू कैन डू योर वर्क। 2 मिनट आती हूँ मैं, देखती हूँ, ठीक है। डन। सो आज के लिए इतना ही। एंड जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आए हैं वो लोग अब सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियसली अगर कोई टास्क दिया है वो बाकी है, यू कैन परफॉर्म। ओके, नहीं चालू if they wish to leave the meeting they can. Okay, you can complete the task.